Good morning, 9th class. I hope you all are fine. Take care yourself and your family also. So in English class, this is your English class, and you all know that in English you have two books. First one is Behave and second one is Lost Child. Okay. First book name is Behave and second book name is Moment. So today we will start the Moment. Okay. The Moment book. The first chapter of this book is The Lost Child. Have you familiar with this story, The Lost Child? If you know this story, so well and good. But if you have no idea about this story, so you can carefully listen this story, listen this video, and very interesting story it is. So in this story, before starting any story, we should mention what's the theme of a story and what is the main complement of this stories. So whenever we read the story, so two things is very important in this, in every situation or every story. That is, first one is the theme of a story. Okay, कोई भी अगर हम स्टोरी देखते हैं या कोई भी हम फिल्म देखते हैं तो फर्स्ट मेन थिंग इज व्हाट्स द प्लॉट, व्हाट्स द थीम ऑफ दिस स्टोरी, एंड सेकंड थिंग इज दैट हाउ मेनी करेक्टर्स इन दिस. ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि थीम क्या है उसकी, और सेकेंडली कि हम क्या उसमें करेक्टर्स हैं. तो इन दिस स्टोरी द प्लॉट इज़ वेरी सिंपल. द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज सो इनोसेंट. The second thing is character. When we talk about the characters, so in this character we have seen the two types of characters. First one is main character and second one is common character. You can see the common word in this story. So main character, a child. This story around only this boy. So the main character of this story is child, and the common character is his father, his mother, and other peoples who is present in this story. So shall we start this story? A child goes to a fair with his parents. Okay, in this story the writer mentioned the lines before this story, that is, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and his toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer him to him? So these lines meaning is, have you seen any fair in your location or locality? क्या आपने कभी कोई मेला देखा है अपने आसपास? आपने देखा ही होगा. ठीक है, तो हम वी आर सो एक्साइटेड टू ग्रो टू द फेयर, बट एट द टाइम वी स्टे एट होम. बट इन द प्रीवियस टाइम वी हैव एंजॉयड सो मच ऑफ फेयर्स इन आवर लोकेलिटी. हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे जो फेयर्स है वो इन्जॉय किए हैं. फेयर मतलब मेला है. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों से एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें एफिक्शनेट हो जाते हैं, हमें वो चीज़ चाहिए होती है, पर कभी कभी वो हमें पेरेंट्स नहीं दिलाते हैं तो हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है ना. ये वाली सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब हम एक मेले में जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एक जो बॉय है वो कहाँ गया है? अपने पेरेंट्स के साथ फेस्टिवल में गया है. सो दिस स्टोरी स्टार्टेड विथ, it was the festival of spring, the season time. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, some other sets being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So it was the festival of spring, बस जो स्प्रिंग टाइम का एक फेस्टिवल है. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, बहुत सारे लोग क्या करें, छोटी छोटी लाइन से, यानी कि छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं वहाँ से कोई, समवन यूज द हॉर्स फॉर राइड, समवन सेट इन राउंडिंग, एंड बहुत सारे लोग क्या हैं आपस में जा रहे हैं. कुछ लोग मेले में जाने के लिए बुलॉक कार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं. सो वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लैग. तो एक लिटिल बॉय जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ जा रहा है, बीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. He is very excited to go out the fair and enjoy the other things. So come child come, called his parents as he lagged behind. Most of the time the parents said only one word to the child, that is come child come, because he was so affectionated around the things. तो हमेशा क्या हो रहा है, वो पीछे छूट जा रहा है क्योंकि बाकी चीज़ों को देखते रह रहा है. तो some of the time, most of the time the parents said only one thing, that is come child come, आगे आओ, आगे आओ. Fascinating by the toys and shops that lined the way,
बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जा रहा है, एफेक्शनेट हो जा रहा है उसे खरीदने के लिए, जो भी वहाँ पे टॉयज़ हैं। इसलिए उन्हें देखते ही देखते वो कहाँ रह जा रहा है, पीछे। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering all the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in his eyes. And he wants to so many of toys to play, but sometimes he see the refusal to his parents' eyes. इट मीन्स कि वो बहुत सारे टॉयज़ लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें लेना चाहता है, बट समटाइम्स वो कहते कहते क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, बिकॉज ही ईजली सी रिफ्यूज़ल ऑफ द पेरेंट्स आइज़, यानी कि अपने पेरेंट्स के आइज़ में ही वो देख ले रहा है कि ये पक्का मना कर देंगे अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये ले लीजिए, है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट, सो ही रिक्वेस्टेड वन ऑफ मोर टाइम दैट आई वॉन्ट दैट टॉय। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके फादर ने उसे किससे देखा, रेड आइज से देखा, ठीक है। In his family's tyrant way, his mother, melted by the free spirit of the days, was tender and giving him a finger to hold, said, "Look, child, what's before you?" अच्छा ठीक है, फादर ने तो रेड आई से देख लिया, बट मदर जो है उसका हाथ पकड़ी और कह रही है कि आगे चलो, आगे बहुत सारी चीज़ें, समटाइम वैसे ही पेरेंट्स करते हैं ना कि ये चीज़ मत लो, थोड़ा आगे चलो, इससे भी अच्छी चीज़ मिलेगी, है ना। तो ठीक है, वो मान जाता है। It was flowering mustard field, pale like melted gold, at it swept across miles of miles even land. अब जब भी हम मेले की तरफ जा रहे हैं तो इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यू नो, सरसों के खेत, ठीक है, चारों तरफ क्या है, मस्टर्ड फील्ड है, और ऐसा लग रहा है ही लुक्स लाइक द गोल्ड मेल्टेड, वो पीले येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड मेल्ट हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर ग्लॉडी पर्पल विंग्स, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो होती हैं ना, एक टाइप के इंसेक्ट हैं, intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So there is so much of things which is come to the fair way. So first one thing is dragonfly. He very affectionate to see the dragonflies and the black bees which they collect the nectar of the flowers. So the child followed them in the air with grace. बहुत ज़्यादा जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनका पीछा करने में बॉय जो है वो पीछे रह जा रहा है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही व्हेन ही लुक्स द बटरफ्लाइज ऑन द एयर, सो ही ट्राई टू कैच इट, बट इट टू गो द फ्लटिंग, पर जो बटरफ्लाइज हैं वो कहाँ हाथ में आती हैं, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉच इट इन हिज हैंड, देन हिज मदर गेव अ cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." They do so much of activities, he does so much of activities, so he lagging behind from his parents. So then the parents called his come to the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them in a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were streaming out from their hiding place to enjoy the sunshine. So the characterization, the picturization of this paragraph is the way of फेयर, रास्ते का जो है पिक्चराइजेशन है कि क्या क्या चीज़ें उसे मिल रही हैं। फर्स्ट ही गेट द ड्रैगन फ्लाइज, देन ही सी द ब्लैक बीस विच वी कलेक्ट द सो ऑफ हनी फ्रॉम हिम, सो एंड नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंसेक्ट विच ही सी इन द वे ऑफ फेयर. सो come child come, his parents called from the shade of grove when they had seated themselves on the edge of wall. अब चलते चलते वो थोड़ा सा थक गए हैं